नजर आएगा परिवेसिकल कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन या मोलर फ्लेम शेप कलेक्शन एक्स्ट्रापेरिनल रप्चर में। इंट्रापेरिनल रप्चर में आपको क्या नजर आएगा, अराउंड बाउल लूप्स कलेक्शन सीन इन द बाउल लूप्स, ठीक है। फिर मैकेनिज्म क्या है, पेनिट्रेटिंग एनर्जी पेरिक फैक्टर causes extraperennial bladder rupture or intraperennial bladder rupture caused by tract below on the distal bladder, ठीक है। ये बार बार याद करें तो आसान है। क्वेश्चन नंबर देखो, extraperennial bladder rupture where is the most likely to have been ruptured, base of the bladder. Question number 49, intravenous urogram 5 minutes following the administration of 100 ml of non-ionic low or smaller iodinated contrast medium, at which time the patient is well. There is no presence of either renal collective system or ureter, but vein nephrogram are present. What is most likely cause for this appearances? Bilateral ureteric obstruction and hydronephrosis from bladder primary, ठीक है। पॉइंट ये कि नो presence of either renal collective system or ureter, but faint nephrogram present। जब ये बात faint nephrogram आ गई ना, तो मतलब ये है कि bilateral ureteric obstruction है, और कोई ऑप्शन नहीं है। वही हम पढ़ी तो वही सेंस बनती है इसमें। देखो, जब हम IV patient intravenous angiogram are part of intervention of a known transcendental carcinoma of the bladder, his control image is normal. 5 minutes following the administration of 100 ml of non-ionic low or smaller iodinated contrast medium, at which time the patient is well. There is no presence of either renal protective system or ureter, but faint nephrogram is present. What is the most likely cause for the appearances? Bilateral ureteric obstruction and hydronephrosis from the bladder primary. Contrast एक्सप्लेनेशन में भी नहीं हो सकता क्योंकि फिर लीकेज की बात होगी कि कहीं होगी लीक। प्रोफाउंड हाइपोटेंशन रिलेटेड टू contrast इंजेक्शन, ये भी नहीं है क्योंकि फिर पेशेंट बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये पायलट रेनाल आर्टरी स्टेनोज आईवीयू रेनाल आर्टरी स्टेनोज का नहीं करते, रेनाल आर्टरी स्टेनोज के लिए ड्रॉपलेट करते हैं, कुछ और करते हैं। पायलट सिंक्रोनस ट्रांजिशन सर्कुलर कॉर्नियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी नहीं कह सकते, बस इतना कहते थे कि यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी आसान है कि जो है डोज के एडलाइन के CD pulmonary angiogram complaining of intense itching, periorbital thickening and swelling at V's. She has widespread urticaria, tachycardia and a blood pressure of 90/40. मतलब she is having allergic reaction. Which of the following treatment is most urgently required? Adrenaline, epinephrine, 1:1000, 0.5 mg intramuscular. और ये याद करो कि इंट्रामस्कुलर होगा, इंट्रावेनस नहीं देते, ठीक है। जब एलर्जिक रिएक्शन हो तो इंट्रामस्कुलर देंगे एड्रेनलिन और 1:1000 0.5 mg, ठीक है। इंट्रामस्कुलर देंगे, ये रटा करें 1:1000 0.5 mg इंट्रामस्कुलर, 1:1000 0.5 mg इंट्रामस्कुलर। Question 51, which of the following CG protocol is optimal for characterization of a renal cortical solid mass seen on a sound particular old man? अच्छा, renal cortical solid mass seen on a sound particular old man प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल सीटी प्रोटोकॉल ये गाइडलाइंस की तरह है। तो इट इज अनहेड स्कैन फॉर बाय पोस्ट इंटरवेंस कॉन्ट्रास्ट स्कैन रिक्वायर्ड 60 and 100 सेकंड। ये अटक है 60 and 100 सेकंड्स, तो ये और अनएनहेंस एंड एनहेंस स्कैन होती है। जैसे पीछे हमने एड्रेनल एडनोमा कराया हुआ था कि इसमें एनहेंस स्कैन अनहेंस स्कैन करते हैं और फिर लेट स्कैन करते हैं। तो एक अनहेंस स्कैन फॉर बाय पोस्ट इंटरवेंस कॉन्ट्रास्ट स्कैन रिक्वायर्ड 60 and 100 सेकंड। 52. Which of the following imaging techniques is the optimal method to prove or exclude diagnosis of urinary colic? Unenhanced CD abdomen and pelvis performed with low dose MA dose protocol. अच्छा, ये है कि लो डोज MA dose protocol मेरे ख्याल ये है 52 का pregnancy patient। A 27-year-old male presents with severe left blind pain, colic in nature, and microscopic hematuria. The following imaging techniques is the optimal method to prove or exclude diagnosis of urinary colic. फिर बात ये कि यूरिटर कॉलिक जब है ना, तो कहीं यूरिटर के अंदर आपने ढूंढना है स्टोन को ना, तो इसके लिए हम पेन अनहेंड सीटी एब्डोमेन पुलिस विद लो डोज प्रोटोकॉल याद करो। ये लो डोज याद हो जाए तो अनहेंड सीटी एब्डोमेन पुलिस परफॉर्म फोन विद लो एमए डोज प्रोटोकॉल। अब इसकी वजह क्या थी मुझे याद नहीं करते। Virtually all ureter calculi, even those that do not plan radiography, are detected by CT, ठीक है। सारे calculi को CT स्कैन पर देखते हैं। A low MA dose protocol performed
अच्छा ठीक है, a low amyloid protocol performed without intervention or contrast. The patient lies prone to the distinguish between calculi at the radicular junction and those that have already passed into the bladder. The latter will lie dependently within the bladder. ठीक है, तो ये है कि जो लो बर्थ प्रोटोकॉल बजा करो तो ठीक है for ureteric colic. 53% of the following describe the classical arrangement of the duplex ureteric insertion and associated features. ठीक है, ureter from the superior pelvis inserted below that from the inferior pelvis and upper renal moiety has collateral dilatation from the distal ureteric obstruction. ये क्या है कि डुप्लेक्स कलेक्शन सिस्टम है, ये है डुप्लेक्स कलेक्शन सिस्टम लेफ्ट साइड को. ठीक है, डुप्लेक्स किडनी लेफ्ट साइड, तो ये डुप्लेक्स किडनी है. तो the ureter from the upper moiety inserts below that from the lower moiety. नजर आ रहे हैं? ये जो अपर ureter आ रहे हैं upper moiety को, ये inserted below the lower moiety ureter and यहाँ पर obstruct करते हैं, ये दोनों को पुश करते हैं, तो यहाँ and the upper moiety shows hydronephrosis. ठीक है, तो ये अल्फाज में बोले तो ये आंसर है. Ureter from the superior pelvis inserted below that from the inferior pelvis and the upper renal moiety has dilated from the distal ureteric obstruction. ठीक है. Question 54. This scan shows low density solitary right renal mass. What feature on CD would be more in keeping with this legend being a renal carcinoma than a sporadic angioimlar lymphoma? ठीक है. Presence of internal calcification. ठीक है, जब internal calcification होती है तो ये renal carcinoma तो दिखाते हैं, सस्पेक्ट करते हैं. एंजियोमायोलोपोमा के अंदर हेमरेज होती है लेकिन कैल्सिफिकेशन नहीं होती है एंजियोमायोलोपोमा के अंदर, या लिपिड्स होगी लेकिन कैल्सिफिकेशन नहीं होती. कैल्सिफिकेशन मींस renal cell carcinoma. Question 55. From Nigeria, patient comes with hematuria cube material. ठीक है, KB radiograph shows bladder wall calcification. The bladder wall calcification होती है तो what is the most likely cause? Schistosomiasis infection pericarditis. ठीक है, bladder wall calcification जब आते हैं bladder wall calcification तो मतलब ये कि वो है schistosomia infection. और ये bladder wall calcification आपको नजर आए पतला सा एक्सरे पर, तो ये है schistosomiasis. ठीक है. 56. Horseshoe kidney. What is likely to limit the isthmus? Inferior mesenteric artery. Horseshoe kidney में what is likely to limit the isthmus? Inferior mesenteric artery. Horseshoe kidney. What is likely to limit the isthmus? Inferior mesenteric artery. ठीक है, ये टक्कर है. 57. A 10-year-old boy having bilateral multiple epidemic masses measuring up to 4 cm in size. 10-year-old boy bilateral multiple epidemic masses measuring up to 4 cm in size. CT scan shows low density masses with some reduced enhancement following intravenous contrast. What underlying condition is the patient most likely to have? Tuberculosis. ठीक है. अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बायलैटरल एंजियोमाइलोपोमस है, तो जब बायलैटरल एंजियोमाइलोपोमस है तो डायग्नोसिस है ट्यूबरकुलोसिस. यदि 10-year-old boy having bilateral multiple epidemic masses up to 4 cm in size, CT scan shows low density masses with some heterogeneous enhancement following intravenous contrast. तो लो डेंसिटी masses दोनों किडनी में जब होंगे तो एंजियोमाइलोपोमस डायग्नोसिस और बायलैटरल एंजियोमाइलोपोमस सीधे ट्यूबरकुलोसिस. अच्छा, फिर ये 57 का बड़ी एमसीक्यू पर 58. ठीक है, bladder injury. What investigation would you recommend to assess this injury? ठीक है, CT abdomen and pelvis with intravenous contrast and instilled intravesical contrast. ठीक है, इसमें ये होता है कि पेशेंट ब्लैडर इंजर्ड हुआ है तो CT abdomen pelvis करेंगे. ठीक है, फिर इंट्रावेनस contrast और फिर ब्लैडर के अंदर भी contrast देंगे, instilled intravesical contrast, ताकि हमें पता चले कि इंजरी की क्या एक्सटेंट है. क्वेश्चन 58 क्या मेन पढ़े तो सीटी सिस्टोग्राफी. ठीक है, इसको सीटी सिस्टोग्राफी भी कहते हैं, जो ब्लैडर के अंदर डायरेक्ट कंट्रास्ट डालते हैं. is equivalent or better than standard cystography for detection of bladder injury and should be performed in patient already undergoing CT for pelvic fracture. ठीक है, अब इसमें दूसरे ऑप्शन पढ़ते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो. दूसरे ऑप्शन है सीट ऑफ डॉन पर इंटरनल कंट्रोल एंड क्लैम्प यूरिक कैथेटर एंड प्लेट कैन थ्रू ब्लैडर. ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसमें इंस्टिल्ड ब्लैडर के अंदर हमें कोई कंट्रोल नहीं दिया जबकि देना पड़ता है. ये पेरेंट 45 year old man is crushed by a 4
left trunk palate. He complains of failure to pass urine and to abdominal pain. Paragraph shows bilateral proof grammar factor. तो ट्रॉमा की हिस्ट्री भी है, तो इसमें हम ब्लैडर के अंदर डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट देंगे। अनहेंड सीटी पर ये भी काफी नहीं है, पेरिकोर्टान भी काफी नहीं है, रेट्रोग्रेड स्टैंडर्ड सिस्टोग्राफी ये भी काफी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यू आर सस्पेक्टिंग अ ब्लैडर इंजरी, तो तुमने डायरेक्ट अंदर भी कॉन्ट्रास्ट देना है, ठीक है। अगर आगे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, bilateral hyperdense renal masses on unhinged GT. For intravenous contrast, administration of the lesion remains homogeneous or hyperdense to normal renal cortex. There is associated repertoire lymph node enlargement. What is most likely diagnosis? Renal lymphoma, ठीक है। Bilateral hyperdense renal masses, ये क्या है कि bilateral mass renal masses है GT पर, ठीक है। फिर क्या है कि जब इंटरवेंस कंट्रास्ट हम देते हो तो लेजन जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं, और फिर कहता है कि इसके साथ रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, तो डायग्नोसिस renal lymphoma मोस्ट लाइकली है। ये एसोसिएटेड रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट भी है, और बायलैटरल हाइपरटेंस मास भी है, और हाइपरटेंस renal cortex। तो ये बात दूसरे ऑप्शन कोई चांस नहीं बन रहा है 59 में। renal वन लिम्फ बर्नआउट डिजीज नहीं है, क्योंकि इसमें सिस्ट होते हैं, ठीक है। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इसमें भी सिस्ट होते हैं। एंजियोमाइलोपोज में फैट होती है, फैट डेंसिटी होगी, लेकिन इसमें नहीं है फैट डेंसिटी। अगर तो कैलकुलेट में इसमें कैलकुलेट होगा इसके अंदर, तो मास नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दफा रिवाइज करें। क्या ये 59 वाला? जी बड़ी एमसीक्यू पढ़ो। A 23-year-old female is जी सर, demonstrated असल में नेट प्रॉब्लम तब में हो गया। नेट में, जी ठीक है, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? 59, 23-year-old female अस्सलाम वालेकुम, जी सर, ठीक है। 59 वाला हो गया। bilateral इसको रिवाइज करें। hypertension renal masses are seen on unhinged CT, ठीक है। Following intravenous contrast administration, the lesions remain homogeneous but are hypodense to normal renal cortex, ठीक है। Bilateral renal masses है, और they are hypodense to renal cortex. Then there is associated retroperitoneal lymph node enlargement. Most likely diagnosis renal lymphoma. क्यों है? क्योंकि associated retroperitoneal lymph node enlargement है। फिर bilateral hyperdense masses है और hypodense renal cortex। बाकी कोई ऑप्शन सेंस नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है। फिर ए आंसर है, फिर बी वॉल्न हेपेटाइटिस लिम्फोमा डिजीज में क्या होगा? बायलैटरल एंजियोमायोलिपोमास होगा और सिस्ट होंगे, तो इसमें फैट डेंसिटी होगी, लेकिन ये होमोजीनस है दोनों मासेस ना। डबल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इसमें भी सिस्ट होंगे, लेकिन ये दोनों होमोजीनस है और हाइपरटेंस